Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the video session Cantab Publishers. Dear students, for complete understanding of General Science Class 3, you need the following 4 books. The first one is General Science CSS series Cantab Publishers, जो कि ऑलरेडी आपके पास है. इसके साथ ज़्यादा बेहतर होगा कि चूंकि दीज आर समर वेकेशंस तो आपके पास समर पैक भी मौजूद हो. जो एसएलओज आप लोग सीखेंगे जनरल साइंस बुक में, उन एसएलओज को कवर करना, उनकी एक्टिविटीज मौजूद हैं आपके समर पैक में. एंड इन द सेम वे आपके पास साइंस बुक की वो बुक अगर आपके पास हो तो आप लोगों की जो लर्निंग है उसकी रीइंफोर्समेंट के लिए दिस इज वेरी सपोर्टिंग बुक. और उसके पास जो चौथी बुक है मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज रिसोर्स पैक. रिसोर्स पैक हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है और कोई भी इधर योर पेरेंट्स, इधर योर टीचर, इधर योर सिबलिंग्स कैन डाउनलोड और आसानी से आप लोग इससे गाइडेंस ले सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, वी स्टडीड अबाउट 14 इन्वेंशंस एंड देन we discussed about the pros and cons of inventions. अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, inventors की contributions भी हमने पढ़ ली. अभी we will discuss about some of the recent inventions and their impact on our lives. Computer is taken as the first example, and you know that computer nowadays is a multitasking device. एक काम नहीं होता, कंप्यूटर से बेतहाशा काम हम लेते हैं और कंप्यूटर की मदद से रोबोट्स बन गए जो होटल्स में वेटर की जगह काम कर रहे हैं. कंप्यूटर में एक्सकेवेटर्स आ गए, कंप्यूटर बड़े बड़े काम करने लगे हैं. सो जस्ट हैव अ ग्लांस ऑन द टेक्स्ट, वी गो फॉरवर्ड. कंप्यूटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइसेस इन recent world. We can make every aspect of our life easier with the help of computer. The computer has changed the way of working. The most difficult calculations and the complex process are easily done with the help of computer. All of our workers are computer assisted nowadays. The computer is a wonderful machine that can store information of millions of books in a very small hard disk. Look, अगर हम सिर्फ कभी आप लोग लाइब्रेरी जाते होंगे और लाइब्रेरी में अगर आपके लाइब्रेरी में वो 10,000 बुक्स है तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो 10,000 बुक्स है इसको एक छोटे से हार्ड डिस्क में सेव किया जा सकता है. और ना सिर्फ उनकी राइटिंग बल्कि उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो सकती है. सो दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ अ वंडरफुल इन्वेंशन इन द रिसेंट ईयर्स. कमिंग टुवर्ड्स इंटरनेट. इंटरनेट बहुत जरूरी है. और प्यारे बच्चों, दुनिया में क्या हो रहा है और इस वक्त पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका में क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, एक एक कंट्री का, एक एक डिस्ट्रिक्ट का, एक एक मॉल का सारा इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं. एज आई वाज टेलिंग यू, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज सेल कर सकते हैं. सो द वर्ल्ड हैज, इंटरनेट ने क्या, द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज. यानी जिस तरह विलेज में सारे लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, इस तरह द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट. Internet has changed the way of communication, sharing information, shopping, reading, watching TV programs, and so many more things in which were impossible and are made possible by internet. So this is another wonderful invention. Coming towards microwave oven, जब चीजें ठंडी हो जाती थी तो हम उसको डालते थे, दोबारा तवे पे रखते थे या किसी पतीली में और उनको गर्म करते थे. अब बड़ा आसान हो गया. All time you can like hoten your food and you can even cook a lot of different dishes with the help of microwave oven. और वो भी 2-3 मिनट में. It doesn't take hours. बहुत कम टाइम में सारा कुछ कर सकता है. It was very difficult for mothers to prepare breakfast, lunch and dinner along with the other domestic works. Microwave oven has made easier to serve the food when individual need it. There is no need of skills, just a click of single button and has made it possible for them to make it hot and eat. बड़ा आसान कर दिया. Microwave oven is this one. Now we are talking about debit card. अगर आप
आपके डैड कहीं पे किसी और शहर में जाते और अपने साथ पैसा लेके जाते तो ये भी मुश्किल था, या अगर आपने बैंक में जाते, बैंक में वहाँ पे चेक देते, फिर चेक में से पैसा निकलता, कतार में खड़ा होना, बड़ा आसान कर दिया डेबिट कार्ड ने, एटीएम कार्ड ने. It was very difficult to carry cash everywhere, especially traveling to another city for shopping. The debit card has solved this problem. अभी लोगों के जेब में ज़्यादा पैसा नहीं होता, बस सिंपली कार्ड होता है, जहाँ पे भी जाते हैं पूरी दुनिया में ये कनेक्टेड है, चलते हैं और आप अपना पैसा किसी भी मुल्क में किसी भी वक्त एटीएम के मदद से निकाल सकते हैं. हाइब्रिड कार्स, आपको पता है कि फ्यूल की प्राइसेस दिन ब दिन हाई होती हैं और उसके लिए हाइब्रिड कार्स आ गई. ये हाफ तो इंजन पे चलती है, हाफ बैटरी पे चलती हैं. सो दिस इज मोर इकोनॉमिकल कार. अमेजिंग इन्वेंशन which use both gas and electricity is hybrid car. These cars have reduced the need of oil. These cars consumes quite less amount of fuel as compared to the other cars. So this is another beneficial invention. And now coming towards cellular phone, और cellular phone ने तो वाकई दुनिया में revolution पैदा की, क्योंकि आप घर पे हैं, आप कहीं पे भी हैं और इसकी प्राइस भी बहुत कम है, बड़ी आसानी से एनीबॉडी कैन अफोर्ड. इनके पैकेजेस भी बहुत आसान है. सेलुलर फोन हैज अ वंडरफुल इन्वेंशन. नोबडी कुड बिलीव दैट विदाउट वायर two far sitting people can connect it. Today it seems that everybody has cellular phone and use it with very cheap rates than that of the telephone. टेलीफोन के रेट से इनके रेट्स बहुत कम है और बहुत ही कम कीमत में ये सारी चीजें हम इस्तेमाल कर सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, कमिंग टुवर्ड्स होमवर्क, निकाल दें यानी रेसिन इन्वेंशन के साथ रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है आपके वर्कबुक में और आपके समर पैक में. जल्दी करें, इसको सॉल्व कर लें, बिकॉज आफ्टर दैट यू विल हैव टू शो इट टू योर टीचर. सो बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज.